बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। मैं हूं आपकी टीचर आयशा और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश एंड वी आर डूइंग द इंग्लिश बुक फॉर 4+ years यानी कि फॉर नर्सरी क्लास। एंड नाउ वी आर डूइंग द एंड लेटर्स। वी आर जस्ट अबाउट to finish our letters. Our today's letter is letter U. The sound of letter U is very small sound. U, और letter U हमारा एक वाउल भी है। वाउल्स वो क्या होता है? अभी आप लेटर स्टेजेस पे जाके पढ़ेंगे वाउल्स के बारे में कि हमारे 26 लेटर्स हैं जिसमें हमारे पास 5 वाउल्स हैं और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। मैंने आज आपको इसके बारे में इसलिए बताया है क्योंकि हम बहुत सी जगह पे सीवीसी वर्ड्स पढ़ चुके हैं, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वर्ड्स, तो आपको कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। लेट्स क्विकली लुक एट आवर टुडेज स्टोरी ऑफ लेटर यू एंड द पेजेस रिलेटेड टू इट। So ये है हमारे letter U की story. So once upon a time, there was a cricket match going on. Wow! And as you know, when there is a cricket match, there is a very important person, and the person is a umpire. So the umpire is standing in the cricket field. But what happened? थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि बारिश होना शुरू हो गई. Oh my God! And cricket match has to be stopped. Then the umpire has his umbrella. Yes. So umpire took his umbrella out so that he does not get wet. तो उसके बाद क्रिकेट का मैच तो हो गया स्टॉप और अंपायर चला गया वापस अपनी जगह पे। तो ये है हमारे बुक का पेज। Listen, say, read and write the letter U. Here, how to say the sound. Lips round, the back of the tongue rises towards the roof of the mouth. It's a very short sound. So here we have a umpire and a umbrella. So the umpire stands on the cricket field. It starts to rain softly from the sky. He opens his colorful umbrella to stay dry. और आपको पता है कि हम अम्ब्रेला क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अपने आप को ड्राई रख सकें और बारिश से बच सकें। Some more words are utensils, कहते हैं हम बर्तनों को। Then a urn, this is a vase-like thing which we use to decorate. And then a umbrella. Some more words are a up, a under, and a urn. In communication skills, you are going to look around and you are going to find more words that starts with this letter. Name something you see when it rains. Obviously, the umbrella. The character building tip. Learn from your mistakes. If you made a mistake, it is your learning point. Next time, don't make that mistake again and learn from it and do something better to make it right. मिस्टेक सबसे हो जाती हैं, उनसे हमें लर्न करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा हमसे वो मिस्टेक ना हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स सी सम मोर वर्ड्स। up, us, and earn. And here is letter U hiding in the umbrella. You are going to color it nicely. तो मेरे प्यारे बच्चों, से बहुत ज़्यादा वर्ड्स शुरू नहीं होते, लेकिन ये यूजुअली वर्ड्स के इन बिटवीन ज़्यादा आता है। Let's look at the formation. Starting with a standing line, then there is a curve touching the line below, then go up and finish over here. And same goes with the small u, standing line, a curve touching the line, go up, come down again, and then there is a little loop. This is the only difference in capital and small u, the presence of the loop. The capital U will come in first 3 lines, it's a sky letter, while the small u is a grass letter. Let's circle the pictures that begin with letter U. Wow, we have a soap over here. Is it starting with letter U? No, so we are not going to encircle that. Then umbrella. Yes, it is the friend of letter U. Then what about octopus? No, because it is starting with O. And here we have urn. So you are going to encircle
only the umbrella and an over here. That is all with today's pages, but there are some reinforcement pages as well which we are going to revise with you. Write the first letter of each picture in both capital and small letters. Now here is a rooster, so capital R and small r. Then it is a rhino, capital R and small r again. Then snail and tiger. Circle the correct beginning letter of each picture. This is a rocket. So what alphabet is going to be encircled? Yes, the letter R. Then here is a toy. Encircle T. Match the pictures that begin with the same sound. Here we have racket and here we have ring. So match them both. Here we have spider and here we have sun. So match them both. And same goes with the rest of the pictures. Find their friends and match them accordingly. Now match and write. So the beginning sound of the words are missing. Let's see what words we can add into it. So here it is written un. We are going to add s to it. Then it will become sun. Then a rock is written. We are going to add t and it will become track. Yes. Here rhino, then quill and a umbrella. This way we have made so many words. There is a checklist. Does the child listen attentively to the picture-based stories? Does the child attempt new vocabulary? Does the child demonstrate moral values? And does the child show interest in STEAM activities completely? Do the child's parents actively support the child's learning and development? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन लेटर यू के बारे में। और लेटर यू से रिलेटेड हमने एक वर्ड पढ़ा अंपायर। वो क्या होता है? यस, अंपायर इज अ पर्सन जो कि हमें बताता है कि गेम में क्या चीज हुई है। ही नोज ऑल द रूल्स। वो हमें बताता है कब गेम में आउट हो गया है, कब गेम में एक सिक्सर लग गया है, कब जो है एक बाउंड्री हो गई है। इवन अंपायर्स आर देयर इन फुटबॉल मैचेस, इन बास्केटबॉल मैचेस एंड इन बैडमिंटन मैचेस एज वेल। एंड एवरी प्लेयर हैज टू एक्सेप्ट द अंपायर्स डिसीजन। आपने मेरे प्यारे बच्चों अपने इर्द गिर्द देखना है और लेटर यू से रिलेटेड बहुत से वर्ड्स को गैदर करना है। और ज़रूरी नहीं है कि लेटर यू स्टार्ट में ही आए, वो दरमियान पे भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, एंड सो ऑन। आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया होगा। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।